Well, it's the beginning of a World Cup, an ODI World Cup here, and it has been quite the sweet beginning for India as far as the two bilaterals that they've played are concerned. 3-0 wins in both those bilateral series against Sri Lanka and New Zealand. And joining me today is my colleague Pratyush Raj, who also witnessed some of that action from close quarters. Pratyush Bhai, it is a big year, 12 years after India won that 2011 tournament. The ODI World Cup is returning back to India, and this time around, of course, a lot of questions would have been there because it'll almost complete the 10 years since India last grabbed that ICC trophy in 2013 before they entered the ODI World Cup. But ये जो पहले 6 मैचेस रहे हैं, इसके हिसाब से I think they've started out on a good note, quite a few positives, right? Absolutely, Rahul. Team is more or less sorted. एक थोड़ा, I mean, opener, the way Rohit and Suman has batted is like very, I mean, the aggressive intent. They have started taking on bowlers from the very first over, and Virat Kohli has come good against Sri Lanka. Even in the third ODI, he looked good. He scored at a very brisk rate. थोड़ा सा इशू बस वही है अपना जसप्रीत बुमराह इंजरी इज बिट कंसर्न, बट होपफुली अभी टाइम है तो तब तक जसप्रीत फिट हो जाएंगे. बट ओवरऑल इट्स लाइक कंप्लीटली डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस बाय इंडिया. 6 मैच 2 सीरीज वाइट ओवर्स कंप्लीटली, एंड इट वाज लाइक इट मस्ट बी वेरी गुड फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ द टीम एज अ यूनिट आल्सो. Definitely, and quite a few new names coming into the side, of course. और शुरुआत ऊपर से ही अगर हम करें बैटिंग ऑर्डर में, शुभमन गिल in his first few games अभी इस साल उन्होंने दिखाया है कि जो उनके बारे में इतनी बातें की जा रही थी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018 से, all of them were worth it because he belongs to this level, right? He's showing the way the Indian team has to play right from the very beginning. और कल भी हम देख रहे थे कि रोहित के साथ में शुरुआत में, ऑफ कोर्स रोहित ने अपनी स्ट्राइक रेट इंक्रीज की है टॉप ऑफ द ऑर्डर, बट शुभमन और भी तेज खेल रहे थे शुरुआत में गोइंग इनटू हिज 100. ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं लगता है that this format is tailor made for him. He just added that steel in this batting lineup and the top of the order, and the way he construct his inning, he's very un-Indian approach. He has got this very un-Indian approach. I spoke to his Glamorgan coach yesterday. He said there are glimpses of Sachin when he plays that cover drive, but when he plays that on drive तो थोड़ा लगता है because Rahul Dravid was a very tall guy, and फिर थोड़ा सा जब वो short arm jab मारता है तो लगता है यार वो Australian है. But Suman, he correctly said that he was always a talent, but अभी वो जिस तरीके से वो convert कर रहा है, तो that is like it was a due. उसके इस पे frustrating था 50s 60s getting out, throwing away his start. But now since he has started to convert those starts, so it's just the beginning. It's just the beginning for Suman Gill. True. Even though his father isn't happy for anything short of a double 100, I guess. But that's every Indian father more or less. That's every Indian father. Yeah. And hundreds की बात करें तो I think a big positive for India would be Rohit Sharma getting that 100 after a long time. Of course, मतलब long time उस तरीके से देखा जाता है कि यार Indian team कितना खेलती है. और I think the last he got 100 across formats was during that Test series in England 2021. तो जब से captain बने थे across formats को 100 नहीं मिले थे. But this one will be a big confidence booster. And I think उनकी जो batting style है, especially if India are going to bat till 7 or 8. It is going to be important, right? अगर वो शुरुआत से वो हिट करना चालू करते हैं बॉलर्स को, पावर प्ले का एडवांटेज लेते हैं. I think twice is that it has now happened कि 23-24 ओवर के मार्क के पास में इंडिया has almost reached double 100. You were there in गुवाहाटी में 170-180 पहुंच गए थे वो जब रोहित शर्मा आउट हुए 24 ओवर, एंड कल 26.1 212 रन्स ऑन द बोर्ड. मुझे लगता है रोहित जिस तरह T20 में बैटिंग करना चाहते थे टीम को, वो ODI में वो इंटेंट देख रहा है. The way he has always spoken about कि हमें aggressive ये करना है, वो T20 में नहीं हो पाया, but अभी ODIs में he has taken that initiative, and with Suman on the other hand, तो एक वो पार्टनरशिप उन दोनों की काफी ये होती है that it's very new partnership. काफी कम खेले हैं, बट जिस तरीके से ऑब्वियसली रोहित सीनियर हैं, बट जिस तरीके से ये पार्टनरशिप डेवलप हो रही है, इट्स लाइक स्केरी टाइम्स फॉर द बॉलर्स. ऑब्वियसली इन द ODIs
in the coming year. True. There's also the stat thing, right? The openers featuring for India have hit double hundreds. Of course, Rohit has hit more than one. Kishan अभी खेल रहे थे जो 4 पे आए, and he of course has also hit a double hundred. There's Virat Kohli who has hit so many hundreds across format, only behind Sachin Ramesh Tendulkar when it comes to the overall tally now. और उन सबको आप आउट कर दोगे तो नीचे आएंगे सूर्य कुमार यादव. तो मतलब रिस्पाइट ही नहीं है बॉलिंग अटैक्स के बारे में. लेकिन द थिंग अबाउट सूर्य यादव इज कि अब ओडीआईज में there was this bit of a hint right from रोहित शर्मा, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कवर की थी at the beginning of the season, कि हम फॉर्मेट्स को अलग अलग देख रहे हैं T20 और ODIs को. तो श्रेयस अय्यर still India's favorite in that middle order above Surya. Look, I mean, जितना मुझे समझ में आता है, both Rahul and Rohit are stubborn. Rahul Dravid, they will use. I mean, क्या है कि Surya's thing with ideally Surya, अगर आपका top 3 35 ओवर तक खेल रहा है तो Surya is an ideal guy there. He will go there and he'll play all kind of stroke. उसको ODI में उतना that longer rope नहीं मिला है. But to play Surya, you'll have to either drop Shreyas Iyer, who has been your best ODI batter, and KL Rahul. अगर आप KL Rahul को drop करते हो तो फिर keeping कौन करेगा? So that Surya's corner drum is very interesting. Ideally, if my point of view is, मेरे हिसाब से you have to accommodate Surya in that playing 11 because you need an X factor in your playing 11, right? आपको वो बैटिंग में वो चाहिए जो 20 पे 40 करके दे. So I mean वो वाला एक होता 20 पे 50 कर दे, वो नीचे आके इधर उधर 360 करे. एंड yeah, सूर्या ने नहीं it was underwhelming था, but still अभी he is very new. Still international cricket में he is very new. He has played too many T20s, but ODI काफी कम खेले हैं. But for me, I think Surya is going to be an X factor, and Indian team management somehow will have to accommodate him in that playing 11. So, कहीं ना कहीं आपको डालना पड़ेगा. So with Surya at 5, KL, Surya and Pandya, so that's very, very nice middle order batting. With strong also. True. और उससे थोड़ा सा नीचे आए अगर हम, तो अभी एक पॉजिटिव न्यूज इंडियन फैंस के लिए रही होगी कि रविंद्र जडेजा बैक टू प्लेइंग प्रोफेशनल क्रिकेट, अभी ऑफ कोर्स फीचरिंग अगेंस्ट तमिलनाडु. और उनकी फिटनेस मैटर इसलिए करती है क्योंकि वो ओवर्स जो है इंडिया को एक्स्ट्रा वो भी चाहिए. ऑफ कोर्स यू वांट मोर ऑप्शंस विद द बॉल, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर बैटिंग, क्योंकि वो एक चीज है जो हमने राहुल द्रविड़ के बारे में देखा है. ही लाइक्स टू अकोमोडेट दीस प्लेयर्स. शार्दुल ठाकुर को भी वापस लाइन में लाए. दीपक चाहर अगर फिट होते तो ऑफ कोर्स ही वुड हैव बीन पार्ट ऑफ द स्कीम ऑफ थिंग्स ऑफ दिस टीम. बट जडेजा की फिटनेस, would that also mean Akshar doesn't find a spot in this 11? Because Akshar ने T20 सीरीज में जिस तरीके से बैटिंग की, ऐसा लग रहा था यार ये T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में क्यों नहीं थे. अक्षर का वही है, अक्षर हैज परफॉर्म्ड वेल और इट विल बी वेरी हार्ड फॉर हिम कि अगर उसको प्लेइंग 11 में नहीं रहता. सो इन डे फॉर्म राइट नाउ अभी जडेजा की फिटनेस पे डिपेंड करता है कैसा वो खेलते हैं, कैसा कमबैक होता है. बट अभी अगर पिकिंग ऑर्डर में इफ यू सी, फॉर मी अक्षर इज नंबर 1 and he's he's ahead of Jadeja because Jadeja injured रहे हैं and Akshar has proven himself. इसने अच्छा किया है, आप उसको ऐसे ही साइडलाइन नहीं कर सकते. Jadeja will have to perform. Jadeja will have to come back, like he'll have to do extremely well. Forget about Border Gavaskar in the coming ODIs also. उनको वो करके दिखाना पड़ेगा कि तभी होगी वो टक्कर, because that spot I can see only Akshar Patel. He has done, and Akshar Patel का भी again on these pitches, Indian pitches, Akshar Patel is like stump to stump bowler and वो best है middle over में. बिल्कुल. Last but not the least, and of course the biggest talking point in this Indian team would be bowling, because देखिए इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, रन्स of course लीक होंगे, लेकिन कितने रन्स लीक होते हैं, that will be the differentiator, right? तो T20 mentality का ODI वर्ल्ड कप कहा जा सकता है इसे. and of course इंग्लैंड से ज्यादा रन्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं 2019 में जितने इंग्लैंड से एक्सपेक्टेड थे. बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑफ कोर्स फॉर इंडिया, जसप्रीत बुमराह's fitness hasn't been able to feature properly in the lineup, I think since that England tour last year. वापस आए थे bilaterals के लिए T20 वर्ल्ड कप से पहले, 2 मैच खेले, इंजर्ड हो गए. फिर इस श्रीलंका सीरीज से पहले उन्हें स्क्वाड में डाला गया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वापस हटा दिया गया. I mean,
he is that big player, right? I've just covered a press conference of Paras Mamre before the second ODI against New Zealand, and he said, "देखो, let's just digest this fact कि उन्हें replace करना तो नामुमकिन है, ठीक है? But can India somehow, हम यहाँ पे money ball scheme के हिसाब से सोचे, aggregate a Bumrah in their bowling lineup? Because नहीं सिराज शामी ने यार, जिस तरीके से bowling करी है, देखो, अभी तक Indian conditions, it has been positive, right? you need Bumrah. I mean, the only thing that was missing in T20 World Cup was Bumrah. आई थिंक बुमराह वो एक वही है ना, हम एक्स फैक्टर की बात करते हैं, हमारे पास जो इंडियन पिचेस पे स्पेशली अंडर द नाइट, अंडर द लाइट्स, वो गेंद के साथ, वाइट बॉल के साथ, एंड दैट एक्शन, दैट दोज यॉर्कर, हाँ सिराज हैज बीन एक्सेप्शनल, बट समी has been also very good, but समी का वही होता है when he starts to leak run, तो फिर बहुत होता है। तो बुमराह is your leader of the attack, like बुमराह को आप, I mean, कल भी रोहित ने वही बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि they don't want to take any kind of risk. Even I remember in Guwahati, in the first Sri Lankan ODI, before the first match, on the eve of the first match, sorry, he said कि जब आपको जसप्रीत बुमराह कह रहे हैं कि उसको थोड़ा स्टिफनेस है, तो आप उसको बोलो भाई तू रेस्ट ही कर, बिकॉज ही इज दैट बिग एन एसेट। तो अभी वो बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है। इट्स ओके उसको, ठीक है, अब आई कांट से हिम प्लेइंग इन द बॉर्डर गावस्कर सीरीज आल्सो, देयर इज नो पॉइंट प्लेइंग हिम इन द टेस्ट स्क्वाड बिकॉज, बट in the coming months more ODIs will be played, I think, even if he's fully fit by the time Asia Cup get time tak. So Jasprit Bumrah will have to play. Jasprit Bumrah, Siraj, Sami, this three, Hardik is your fourth bowler, and then play Akshar and Kuldeep, because Akshar and Kuldeep as your two spinner. That's the thing. That should be an ideal bowling lineup for India. Yeah, of course, there's this interesting question जिस पे हमारे colleague वेंकट ने एक piece भी किया था, should Bumrah play tests or other formats in an ODI World Cup? Yeah, that is also going to be a big question जब वो fitness में भी आ जाता है तब। Of course, we'll have to see how team manages his workload later, in the later half of the year. But Kuldeep की आपने बात की, he has been just brilliant. 5 matches, 11 wickets, and of course, the second highest wicket taker so far. Sample size थोड़ा छोटा है, but these are positives you will take because 2019 वर्ल्ड कप के बाद से हमने देखा है टीम में चहल और कुलदीप दोनों की जगह साथ में नहीं मिली। Now going into the World Cup, even if we see Yuzi Chahal part of the squad, even if we see Kuldeep other part of the squad, do you see these two in the lineup together? Because आपने अभी खुद mention किया कि जडेजा और कुलदीप को साथ नहीं होंगे, because in Indian condition you'll need a finger spinner, और आपको कुलदीप या युजवेंद्र चहल में से कोई एक ही खेल सकता है। एंड द वे कुलदीप हैज फाइट बैक ही है, ही हैज बीन लाइक एक मतलब कुछ टाइम के लिए वो आपका नंबर 1 स्पिनर था, देन ही वाज लॉस्ट, ही वाज नोवेयर, देन एक टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच रहता है, नेक्स्ट टेस्ट में उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। आई रिमेंबर कपिल देव पांडे से बात कर, उनके जो कोच है, उन्होंने बोला कि उसको अगर वो एक मैच में नहीं खेल अच्छा करेगा, देयर आर चांसेस कि उसको नेक्स्ट मैच में ड्रॉप कर देंगे। दैट हैज वो एक उस फियर फैक्टर ने उसको काफी मोटिवेट कर दिया दैट मुझे अब हर मैच में ही परफॉर्म करना है। एंड द मोस्ट पॉजिटिव थिंग अबाउट कुलदीप इन दिस 5 मैचेस वाज लाइक दैट विकेट टेकिंग एबिलिटी इन द मिडिल ओवर, पार्टनरशिप ब्रेक करना, एंड दैट वो ड्रिफ्ट वापस था, जिस तरह से दासुन सनाका को एक मैच में बोल्ड किया, वो बाबर आजम वाला याद आ गया, दैट चैंपियंस ट्रॉफी, द वे लाइक राइट थ्रू द गेट, दैट वो बॉल वापस आ गई है। एंड ही इज नॉट बॉलिंग स्लो nowadays, now he's varying his pace very well। वो भी नहीं है कि कुलदीप बहुत स्लो फेंकता है, वो तेज भी फेंकता है। एज के साथ जो कहते हैं मेच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस हो गया है, एंड वन तो सेटबैक लगता है तो फिर देन यू रियलाइज कि कहाँ आपको काम करना है। एंड ही हैज वर्कड रियली हार्ड ऑन हिज बैटिंग आल्सो। वो बैटिंग अब वो ऐसा नहीं है कि दैट वो लगता है कि हाँ ही कैन स्टे देयर। सो कुलदीप फॉर मी शुड, अगर इफ ही रिमेन्स फिट तो उसको ओडीआई में ही शुड बी इन योर प्लेइंग 11। I can't see Chahal back in the 11. Maybe in the squad, but not in the 11. Definitely, of course. As of the last press conferences, India का जो management staff है, उन्होंने ये कहा है कि more or less they see a picture कि 15 का जो squad उनके दिमाग में अब चल रहा है, 20 से वो आने लगा है, and it will only take perhaps another bilateral to finalize on those 15, which is good because in a World Cup year आप अगर थोड़ा पहले certain हो जाते हैं about your players, then they also have the security of whether they are in the team or not.
Right then, I think that's about it. But there's one point जो मेरे दिमाग में अभी आया जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, which is something Ravichandran Ashwin said a few days ago. India में World Cup, Dew is of course going to play a big part. Early morning matches, early morning मतलब 7 बजे से 11 बजे शुरुआत हो रहे हैं मैचेस की, जिससे दोनों टीम्स हैं उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बने. काफी radical thought, but of course an Ashwin thought right there for you. रैडिकल से फर्क नहीं पड़ता है, क्या ब्रॉडकास्टर्स का अलग होता है ना. True. ब्रॉडकास्टर्स क्या चाहेंगे, गेम खेला जाता है, दो क्रिकेट टीम कहते हैं 22 प्लेयर खेल रहे हैं, बट दोज गाइस हु आर मिंटिंग मनी आउट ऑफ इट, वो उनका ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रात में आई मीन भी थोड़ा लूक वॉर्म अप्रोच भी रहा है ओडीआई का इन श्रीलंका में भी, आई हैव सीन इन गुवाहाटी एंड कोलकाता आल्सो. ड्यू फैक्टर ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा, बट आई कांट सी, मुझे नहीं लगता कि वो 11 बजे. हाँ ठीक है, काफी रिवोल्यूशनरी आइडिया है, इट्स गुड, बट ब्रॉडकास्टर्स पे डिपेंड करता है, एंड आई डोंट थिंक ब्रॉडकास्टर्स करेंगे वो, बिकॉज वो Yeah. लेट नाइट लास्ट ओवर का ड्रामा, दैट ब्लॉकबस्टर Prime time. थिंग, Yeah. प्राइम टाइम, हाँ प्राइम टाइम है वो. सब घर में बैठे हुए हैं आफ्टर दैट दैट थिंग नो, वो शाम में, तो वो आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन. वो 1:30 बजे से ही स्टार्ट हो, Mhm. बहुत ज्यादा कर दिया तो 1 बजे से कर देंगे. आई कांट, Yeah. वो 11 बजे वो तो नहीं होने वाला है. It sort of is a litmus test for ICC, of course. ODI World Cup in India, you cannot get a better opportunity to rope in crowds, but can the format do so in 2023? There have been a lot of questions around 50 over cricket. We'll, of course, find out in October, November whether all those questions were valid, or is ODI still going to live an easy life come 2024. Thank you so much, Pratyush, for joining us. Thank you so much to all our viewers. And you know the drill. If you want to read more or watch more or listen to more of what's happening in the world of sports, do log in to theindianexpress.com. Thank you.